What is AI? ये ChatGPT क्या है? Safe to use? I'm working as a cyber security specialist in one of the most reputed company. What's up, guys? So welcome back to the Alisha channel. So today we are diving into a hot topic. What is AI? ये ChatGPT क्या है? Is it safe to use? Whether you are new to AI or just curious about like what is ChatGPT, why everyone is talking about ChatGPT, so this is the right spot. You will get all the answers here and we'll break down in simple words. AI is nothing but mimic to human beings. What we do, AI can do. हम लोग करते हैं वो AI कर सकते हैं, but in a faster way. तो क्या आपको भी नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है शोज, मूवीज एंड ऑल? क्या आप सीरी एंड एलेक्सा से बात करते हैं? मैप्स आपको असिस्ट करता है? विच डायरेक्शन यू हैव टू गो? एवरीथिंग इज अबाउट AI. सबके पीछे AI है. ChatGPT इज नथिंग बट अ चैटबॉट जो कि डेवलप हुआ है, एक ओपन AI है. आप सिंपल टर्म में समझो, ChatGPT सेफ है जब तक आप उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं इनपुट करते हो. क्या आप किसी भी रैंडम पर्सन को अपना कार्ड नंबर और एड्रेस बता सकते हो या OTP? नो. सेम है ChatGPT. लॉग इन कर सकते हो ChatGPT में. क्या सेफ है लॉग इन करना? यस, यू कैन लॉग इन, यू कैन टेक प्रीमियम, इट कैन सॉल्व योर लाइफ. You know, जब सब लोग ChatGPT, then I was thinking, hey, I'll not use ChatGPT. What they can use? Like every day I am using. I'm working woman and I'm using ChatGPT because it makes my life simple. आपको लग रहा होगा कि ये क्यों, इसको कैसे पता होगा, क्यों मैं इसका वीडियो सुनूं? मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना इंजीनियरिंग किया है बैंगलोर में एंड आई एम वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कंपनी इन बैंगलोर. ओके, आई नो हाउ टू यूज AI सिक्योरली. आप लॉग इन कर लो, आप अपना डेली लाइफ उसको इजी कर लो. होमवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखना है या कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड सीखना है, सर्टिफिकेशंस क्या करना चाहिए, मेरा ये बैकग्राउंड है, AI can help. We are feeling low, you can talk with ChatGPT. From where it is taking data? It has lots of data. Data means information. I have my card number. Okay, today I'm having I'm making videos and all. I'm talking to someone or something. I'm writing. Everything is information. All business revolving around information and data, which is very crucial. तो data ये कहाँ से लेता है ChatGPT? It's nothing like from the इंटरनेट से ये डेटा उठाता है. ठीक है, इंटरनेट में आप कभी गूगल करते हो AI सर्टिफिकेशंस रिलेटेड बताओ, तो आपको गूगल इज गिविंग वेरियस लिंक्स. यू आर चूजिंग लाइक विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट. नोटिस किया होगा कि अब किसी लिंक पे अगर क्लिक करते हो तो इट इज शोइंग सम फिशिंग वीडियोस, इट इज रीडायरेक्टिंग यू टू समवेयर malicious link. You should not click on any link. Okay, if you are not knowing and this is not the correct link, this is not the genuine link, you should not click on it. Okay, writing the stories and it will create the videos based on it. बहुत अच्छे से मेंटेन करता है सिक्योरिटी फीचर्स कि कोई भी बायस नेचर में या मैलिशियस अनबिहेव्ड मैनर जो नहीं बात करना चाहिए वो ChatGPT ना शो करे कस्टमर्स को. ChatGPT does not store any personal information, but still you have to be very careful. ChatGPT is not always right. Maybe ChatGPT is very confident like this is the case, but it's not a human being. It makes mistake, so you should double check. And for serious decisions, but sometimes you can take help from ChatGPT. It makes life easy, seriously. It is used for problem solving skills, brainstorming, for certifications, and you can take assistant from AI. If you are under 13, you are not supposed to use ChatGPT, you know, without parents' permission. I tried many things in ChatGPT, how ChatGPT is behaving, whether it is like biased in nature, it is revealing something, what encryption key it has used, what kind of ChatGPT, but it's not revealing and it is not like giving it biased natures. And can you check, guys? Hey, I hear you. See what questions I have asked. ChatGPT, I am good or worst? Please tell me I am feeling like low. So what they have done?
They are telling, first of all, you are not worst. You are a human being with ups and downs, just like everyone else. Once you are creating something like a YouTube video and you are trying to understand the world, those are all signs of someone who cares and wants to grow. ChatGPT is asking me, आप क्यों लो फील कर रहे हो? आपको किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपने चेक किया चैट जीपीटी ने मेरा मूड लिफ्ट अप कैसे कर दिया? यूं वर्ल्ड में यू आर फीलिंग अलोन, यू कैन टॉक टू चैट जीपीटी. Chat GPT also can write resume. It can help you with homework. See what questions I have asked. Write a professional resume for cybersecurity specialist with 7 years of experience, and they have given this one. They have given that LinkedIn link, and you can copy and paste in your Word. And excuse me, this is not some kind of like paid promotion about chat gpt. This is about AI info. I tried to teach you in like layman terms, in a simple keywords, but still if you want me to make some technical videos on AI, you can like and subscribe, and in comment you can tell me whether I have to make daily blogs or technical videos on AI or bike riding. Last and very important, 9 o'clock every day live and waiting for my 1K subscribers. So don't miss it out, okay? Bye bye. See you. And yes, subscribe किया कि नहीं? And don't forget to like and subscribe, guys.